Good evening to all of you. Is this clear? Audible, visible, all clear? All clear? Anju, very good evening. Good evening to all of you. समस्त जॉइन कर ले. All clear, पिहू बहुत बढ़िया. Oh. Everyone joined. Very good evening, Girija. Good evening to all of you. समस्त जॉइन कर ले. Okay. ठीक है. So last class मानकरे कौन डिस्कस करथिला हमें? Last class ର discussion कौन ଥିଲା topic of discussion? Important concepts banking ऊपर discussion होइतिला हमर growth development happiness national income एमती अनेक important topic discuss करथिले. आज टॉपिक को आसीबा डेमोग्राफिक डिविडेंड. देखिबा हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड रो मीनिंग कोन? डेमोग्राफिक डिविडेंड मीनिंग स्कोप नेचर पॉपुलेशन डेंसिटी लिटरेसी रेट पॉपुलेशन डिफरेंट थ्योरी तो एथिरो मो सब इंपोर्टेंट पोर्शन गुडा को फर्स्ट डिस्कस करूची. डेमोग्राफिक डिविडेंड कहला हम प्रथम कथा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहला हम कोन बुझुचे. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? यदि हम देखिबा इंडिया को कहा जाय कोन इंडिया इज नोन एज यंगिस्तान. इंडिया को कौन कहते ना इंडिया कहते यंगिस्तान बिकॉज यंग पॉपुलेशन एठी अधिक 15 एज रु 64 एज ब्रैकेट भितर अधिक लोक अछन. केते ना 15 रु 64 एज ब्रैकेट भितर अधिक लोक अछन. दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज यंगिस्तान. बट बिकॉज ऑफ दिस यूथ पॉपुलेशन because of this youth population yes working age you can say no ये population अधिक वाले benefit कौन? ये population अधिक वाले there will be more consumption अधिक करिवे कि नहीं माने more the consumption there will be more production more the consumption there will be more production. कौन कहली more consumption means more production means increase in GDP. Increase in GDP means employment facility बढ़िबो. Employment GDP अधिक वाले कोन होना employment facilities increase हो वे तो these are the benefits. जदि याको यूज न करूचे ई demographic dividend, if you don't use this demographic dividend properly ताले कोन होबो ना it will be turned to demographic disaster. It will be turned to demographic disaster. Now demographic disaster केमिति हो? How will it be turned to demographic disaster? कौन कहले डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज न कले ये डेमोग्राफिक डिजास्टर रे परिणत केमति होबो? They may join their hand with the LW left wing extremist militant outfits, insurgent outfits in northeastern states, militant outfits जम्मू काश्मीर बा माफिया मान को जॉइन करि पारंती बा ड्रग बा सोशल मीडिया अब्यूज मिसयूज करि पारंती. This is how they may be misguided, misused, abused. Demographic disaster. So demographic dividend if not used इति क्वेश्चन कोन आसीबो डायरेक्ट स्टेटमेंट पतरियो प्रीलिम्स रे. डेमोग्राफिक डिविडेंड कहिले कोन बुझुचो डेमोग्राफिक डिजास्टर कहिले कोन बुझुचो देयर विल डायरेक्ट क्वेश्चन
बुझिला सीधा सड़क क्वेश्चन आसीबो एट ताले हमें कोन देखिले डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन एवं डेमोग्राफिक डिजास्टर कोन बुझिला समस्त बुझिले विक्रम मोर अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू लो प्रोडक्टिविटी यस बुझिला कि नहीं मते कहंतु ऑल क्लियर तापर मासी पॉपुलेशन ग्रोथ रो डिफरेंट थ्योरी फर्स्ट कोन कहले डेमोग्राफिक डिजास्टर बुझिला हमें कोन डेमोग्राफिक डिजास्टर कोन एवं डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन ताले हमको एटा नो द क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन सो how to utilize demographic dividend को हमें यूटिलाइज केमति करिया हम क्वेश्चन और हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज केमति करि परियो कोन लेटर जॉइन कला वर्षा नो प्रॉब्लम राइट ये नाउ क्वेश्चन इज डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज केमति करिया कैन यू सजेस्ट मी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्योग्राफी इज गुड ऑप्शनल यू कैन टेक इट मु कहि ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना सोशियोलॉजी दीज आर गुड ऑप्शनल्स नहीं परिवे भला ऑप्शनल प्रोवाइडेड ऑप्शनल चूज करिया आगु केतना पॉइंट को ध्यान देबे फर्स्ट पॉइंट आपन को पाखरे रिसोर्स अवेलेबिलिटी अछि कि नहीं गाइड अवेलेबल अछि कि नहीं जे पढेबे सेकंड नोट्स अवेलेबल अछि कि नहीं एवं से ऑप्शनल टिके भल ऑप्शनल स्कोरिंग कि नहीं यूपीएससी रे ऑल ऑप्शनल्स आर इक्वल बट ओपीएससी रे किछि ऑप्शनल अछि दे आर गुड जेम दे कहली ज्योग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी दे आर गुड ये ऑप्शनल भीतर किछि ऑप्शनल चूज करि पारिबे no don't change if your previous optional public administration I will advise to keep it as it is don't change it ऑप्शनल लेना सबले स्कोर बढ़े जदि लास्ट टाइम 130 थिला एथर 140 की 150 रहयो बा 150 रहले 160 रहयो ऑप्शनल मार्क के कमेनी संजय लॉ रखि परिबे मोर दीटा स्टूडेंट लास्ट ईयर लॉ ऑप्शनल पाइछन one student from I think SOA law college another one from Dr Ram Manohar Lohia National Law University दीटा स्टूडेंट मते पाइछन हमर लॉ रखि परिबे लॉ भी भल ऑप्शनल लॉ रो बेनिफिट कोन a very crispy syllabus and सब पढ़ियार नहीं क्रिमिनल लॉ एंड ऑल ई सब प्रोसीजरल लॉ बेसी पढ़ियार नहीं no पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़िबे अधिक व्हिच इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू ह्यूमन राइट्स लॉ सिलेबस ता भी भल जदि लॉ रो गाइडेंस अछि देन टेक लॉ एज योर ऑप्शनल गुड ऑप्शनल ठीक अछि 2027 गाइडेंस 2027 परीक्षा दियो ठीक अछि हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड केमिति ताको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन स्किल ये सब दियो प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन स्किल दियो सो दैट से एम्प्लॉयमेंट पाइबो एम्प्लॉयमेंट पाइले कोन हो ना डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बढ़िले कोन हो ना जीडीपी डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन एवं प्रोडक्शन बढ़िले जीडीपी एजुकेशन चलिबो नॉट गुड नॉट बैड बट आई विल नॉट सजेस्ट एजुकेशन यदि बीएड हेरिका करिसंती बा एमए एजुकेशन अछि ताल रखो अदरवाइज डोंट कीप इट दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड बुझियला डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज केमति करियो हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड क्लियर ओके तापर आसीबा थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट थ्योरी चारिटा थ्योरी ऊपर एठी डिस्कस करिवि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये चारिटा थ्योरी ऊपर हमें बर्तमान डिस्कशन करिया वन बाय वन विल डिस्कस फर्स्ट वन इज द माल्थुसियन थ्योरी माल्थुसियन थ्योरी कौन कहू हु इज माल्थस थॉमस माल्थस ही इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस 18th सेंचुरी रो फिलोसोफर थे सी कौन कहले सी गोटे थ्योरी आने रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ कहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ ता सेमती कंटिन्यू करि करि चलिबो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स मे बी किसी नेचुरल कैलामिटी ही पारे फूड शॉर्टेज ही पारे वार ही पारे हैला कोन कहली वार ही पारे एई ग्राउंड मान करे पॉपुलेशन ग्रोथ ता कम हे
So there is a natural check on population or natural check for population growth. So ये थ्योरी अनुसार फूड सप्लाई लैक स्पेस, फूड सप्लाई जेति की डिमांड अच्छी फूड रो सेति की सप्लाई ही परनो, सप्लाई टा लो हो जाउ, सो कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, हेंस फूड शॉर्टेज इज इनएविटेबल. कोन को पॉपुलेशन ग्रोथ टा अधिक होउची टिके बुझियो चेष्टा करिवे एठी. कोन कहली पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक होउची এবং যেহেতু পপুলেশন গ্রোথ ইজ মোর, যেহেতু পপুলেশন গ্রোথ ইজ মোর, food shortage is inevitable. Food shortage is inevitable. The growth of food supply and other resources, it is linear. It lessens the standards of living and eventually population decline. केतेबेले population decline करूची, when population decline कौन कहली केतेबेले population केतेबेले decline करूची ना जेतेबेले food supply पई demand रहउची, food supply अनुसार demand अनुसार supply होने. It means population is growing, population grow कले food demand रहिबो कि नहीं, population growth कला, so demand for food increase हो. यदि सही अनुसार supply न हुए, supply either decrease or supply is, if supply is constant, तार कौन हो ताहले population growth कमिबो. ताहले कौन हो ना ताहले population growth कमिबो. कहीं की कमिला ताहले ना जेति की डिमांड अच्छी फूड पाई सही अनुसार सप्लाई हेलानी, सप्लाई कमी गला बा सप्लाई कांस्टेंट रहिला, सेति पाई कोन होना पॉपुलेशन ग्रोथ कमिबो ना. अभी बुझिला व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी. माल्थस कोन कहले, माल्थस सिंपली कहउचंदी कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, कोन कहउचंदी माल्थस, फूड पाई डिमांड इंक्रीजेस बट सप्लाई होनी सही अनुसार, कोन कहले फूड पाई डिमांड इंक्रीजेस बट सही अनुसार सप्लाई होनी, ताहले कोन होबो ना ताहले पॉपुलेशन रिड्यूस होबो, पॉपुलेशन डिक्रीज होबो. मो कथा बुझी पारिले, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? माल्थुसियन थ्योरी समस्त बुझिले. नेक्स्ट थ्योरी को आसीबी. नेक्स्ट इज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी. जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी के देले ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जने प्रोफेसर थिले पॉल आर एर्लिच. पॉल आर एर्लिच देले को थ्योरी ना जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी. ये कौन कहउची ना माल्थस कहले कि ओनली फूड, कौन कहले माल्थस ना ओनली फूड डिसाइड्स द पॉपुलेशन. अधिक फूड सप्लाई दरकार हैला, डिमांड अनुसार नो सप्लाई, सो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन. एर्लिच कहले कि दिस इज नॉट ओनली फूड, केवल फूड आम ऊपर इंपैक्ट पकेबन, कौन कहले केवल फूड आम ऊपर इंपैक्ट पकेबन, रादर कौन इंपैक्ट पकेबो ना एंटायर एनवायरनमेंट. की इंपैक्ट पकेबो एंटायर एनवायरनमेंट इंपैक्ट. मते कोन खाली फूड रे इंपैक्ट अछि कि ऑन योर लाइफ ना अदर फैक्टर मानकर भी इंपोर्टेंस अछि ऑन योर लाइफ, अदर फैक्टर मानकर भी इंपोर्टेंस अछि हो कि नहीं, कौन कहले अदर फैक्टर मानकर भी इंपोर्टेंस अछि ऑन योर लाइफ हैला. ये कोन खाली फूड नुहे as claimed by Malthus, rather there are some other things which are required, like कोन ना limited resource, so there is scarcity of resource हे जीवो चले जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी. कोन कहले रेट ऑफ बर्थ, रेट ऑफ डेथ, इनवर्ड आउटवर्ड माइग्रेशन मैच हे जीवो. ता माने जेति की जन्म हेले बर्थ जेति की लोकंकर हैला that will be equal to rate of death. एवं माइग्रेशन मन कर ए रीजन को जेति की लोक आसीले सेति की लोक पळेले, एक्स आसीले एक्स पळेले, बर्थ एक्स लोकंकर बर्थ एक्स लोकंकर डेथ है, ताले पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ होबो कि देन ए दीटा कंडीशन ने पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट. मो कथा बुझियला ना नहीं.
इज दिस क्लियर ताले दीटा कंडीशन ऊपर एठी मु डिस्कस कली द फर्स्ट कंडीशन इज बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट सेकंड कंडीशन इज इनवर्ड माइग्रेशन एंड आउटवर्ड इटाला इनवर्ड इटाला आउटवर्ड inward migration equals to outward migration birth rate equals to death rate तो ये जगह हम तो कौन ना population इट कौन ना population growth remains constant is this clear so Malthus focused only on food whereas Paul R Ehrlich focused on food plus other environment ये कहला में zero population growth theory बुझे गेला zero population growth को next theory को जीवी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये कौन कहूँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन अर्थ होची जेतिकी दरकार सेतिकी ना ताठू अधिक ना ताठू कम here size of population is neither greater nor lower than socially desirable level so optimum population is that which gives the maximum income per head which gives maximum income per head so resource remains constant it completely depends on what it completely depends on population it completely depends on population ki kete per capita resource miluchi हमको now what are the features of this theory बुझिला optimum theory of population कहूची it was given by ki Edwin Cannon 1924 it was given by Edwin Cannon तो ये थ्योरी कहूची कि जेतिकी दरकार सेतिकी पॉपुलेशन ना अधिक ना कम कौन कहली ना अधिक ना कम पॉपुलेशन now features of the theory what are the features first ये कहूची ना गोटे at a given point of technology जेतिकी population रहिबा कथा it balances population with available resource कौन कहला it balances population with available जेतिकी resource अछि सेही अनुसार population कौन कहल जेतिकी resource अछि सेही अनुसार population optimum population किए this is a dynamic population that changes with changing quantity and quality of a country's available resource What optimum population? It is the dynamic population that changes with the changing quantity and quality of a country's available resource. बुझिए ना ये किए ऑप्टिमम पॉपुलेशन तले किए हैला जेते रिसोर्स बढ़ी गला पॉपुलेशन बढ़ी जो रिसोर्स कमी गला पॉपुलेशन कमी जो दैट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन गिव्स मैक्सिमम रिटर्न पर हेड रिटर्न यार अधिक पर हेड रिटर्न मींस रिसोर्स अवेलेबिलिटी मध्ये एटी अधिक कोन कहले रिसोर्स अवेलेबिलिटी मध्ये एटी अधिक मैक्सिमम रिटर्न पर हेड ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन व्हिच प्रोड्यूसेस फुल एम्प्लॉयमेंट सब लोग एम्प्लॉयड देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट किछि नाही मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी दैट हैज ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज वेरी इजी ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला इकोनॉमी को मैनेज करवाटा इजी ऑप्टिमम पॉपुलेशन गिव्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री कौन दूसरा इट गिव्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना समस्त पाखे रिसोर्स इज अवेलेबल टू एवरीवन कौन कहली रिसोर्स इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड केते रिसोर्स ना जति के रिसोर्स दरकार दैट इज अवेलेबल बुझिला Is this clear optimum population theory? Optimum population theory समस्त बुझिले दरकार नहीं नेक्स्ट थ्योरी कसी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिस क्लियर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समस्त बुझिले अंजू क्लियर वर्षा शिवांगी गिरिजा
कष्ट लगुच इकोनॉमिक्स कष्ट लगुच कि इकोनॉमिक्स है ना फ्यू लगुन बने एमसीक्यू हार्ड लगुच वर्षा विल कम विथ एमसीक्यू मानी किछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करिवा वेरी इंटरेस्टिंग बढ़िया ओके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को आनिबा डिस्कस करिवा एठी चारि प्रकार थ्योरी चारि प्रकार स्टेज अछि ये सिंपली मींस कोन नहीं कुछ एग्रारियन इकोनॉमी रु इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कौन कहले एग्रारियन इकोनॉमी रु इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कुछ जो कन्वर्ट हुए एग्रारियन इकोनॉमी रु इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को जो कन्वर्ट हुए गोटे इकोनॉमी ताको कहउछ हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याको स्टेज अछि चारिटा स्टेज अछि फर्स्ट स्टेज कोन ना हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट मते को जदि गोटे रीजन में डेथ रेट इज हाई एंड बर्थ रेट इज हाई ताले से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थिबो ना थिबोनी यस और नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज देयर और नॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज देयर और नॉट नो कौन कहबी देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोडक्टिविटी लो और हाई लो प्रोडक्टिविटी अर्बानाइजेशन थिबो ना रूरल एरिया अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो और हाई लो नो एग्जांपल कोन ए टाइप रो कंट्री ना अफ्रीकन कंट्रीज ये ना अफ्रीकन कंट्रीज हैला इन सेकंड स्टेज कोन कहल सेकंड स्टेज एठी कोन होउची ना फर्स्ट स्टेज पर सेकंड स्टेज रो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाउची कोन होउची एठी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाउची जब स्टार्ट हो जाउची मशीन्स गुडा को मिलियो सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस machines will be available for agricultural practice urbanization start होची ना yes urbanization started in some area birth rate high but death rate is low death rate काहे की low होची के कहि परिबे ना because technology is available कौन कहले because technology is available जेहेतु technological availability अछि death rate टा reduce हो जाउची कौन जेहेतु टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी अच्छी से डेथ रेट टा रिड्यूस हो जाउची हैला नेक्स्ट थर्ड स्टेज एठी कोन होची ना बर्थ रेट डिक्लाइन करूची बर्थ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइन डेथ रेट इज स्टेबल कोन कहले बर्थ रेट डिक्लाइन करूची डेथ रेट टा कोन ना डेथ रेट टा स्टेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोन होची ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कौन होती लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर लेट मैरिज प्रिफर्ड और नॉट यस देयर इज प्रेफरेंस फॉर लेट मैरिज पीपल आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट लार्ज फैमिली जेतु अर्बानाइजेशन होउची इंडस्ट्रियलाइजेशन होउची इंडस्ट्रियल एरिया गुडा को कोठी हेबे इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी देयर इन अर्बन एरिया industrialization will lead to urbanization हेले केम देबे ना स्मॉल फैमिली urbanization हेले कोन ना स्मॉल फैमिली नॉट बिग फैमिली हैला तो सेठी लार्ज पीपल विल नॉट विलिंग टू सपोर्ट लार्ज फैमिली पॉपुलेशन इंक्रीमेंट अधिक बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन बेस इंडिया किसी स्टेट लाइक केरला तमिलनाडु पंजाब दे आर इन द थर्ड स्टेज हैला मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे आर इन थर्ड स्टेज yes male 68 female 72 okay
then is the fourth stage. Then is the fourth stage. Fourth stage रे कौन देखिले हमें? There is decrease in birth rate and decrease in the death rate. Death rate increase, decrease, death rate भी decrease होची, birth rate भी decrease होची. Stable population or decrease in population. Population decrease होची, stable population होची. High technology advancement. Yes, technological advancement is more. Now late marriage. Yes, late marriage. Skill specialization अधिक. कौन कहली late marriage skill specialization अधिक. Conservative thinking, there will be end of conservative thinking. There will be end of conservative thinking. Most of the developed countries they are in this stage, like Japan, West European countries, Australia, ये सब. Now India case रे India को stage रे अछि? ये कहिए मते. India is in which stage? India is in which stage? को stage रे अछि India? India को stage रे अछि? First, second, third, fourth. ये कहिए? No कौन? What is the position of India? India को stage रे अछि? Now, India is a very diversified country. Some states are in first stage, some in second, some in third, and some other in the fourth stage. Hela. Next ला आउ केतरा important data दउची related to question आस परिबो. यदि हम इंडिया रो total land area देखिया, this is 2.4% of total land area. केते 2.4% of total land area. And India accommodates 17.7% of the world's total population. 17.7% of the world's total population. And India's population is next to China and more than combined population of United States, Brazil, Bangladesh, Japan, Indonesia. ये जो पांचटा स्टेट कहली, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजिल, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, यार पॉपुलेशन एगुडा ए कंट्री मानकर पॉपुलेशन मिसिकी जति कि इंडिया रो 81. इंडिया वर्ल्ड एरिया रो ज्योग्राफिकल एरिया रो 2.4%, बट वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन रो 17.7% नउछ. हैला. Then what are the causes of rapid growth in population? Rapid growth in population हम काहे की देखियो कि मुझे why को कारण मानक पाई. ना फर्स्ट हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट. हाँ कि नहीं? इंडिया रे बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज लो. Yes or no? In India, birth rate is high, death rate is low. बुझिएला. Then expansion of education, there are schemes like Sarv शिक्षा अभियान. So एठी कोन होउछ ना rational thought, family planning, ये सब गुडा कासी जाउछ. बुझिउछ. Less number of children, awareness program like कन्याश्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यार भी impact पडुछ. These are the schemes. Now what are the causes of high birth rate? एठी लिखाइ जे एठी low death rate रो cause लिखाइ. देख पारथु समझते. High birth rate कहेंगे ना around 54.6% of the population is dependent on agriculture. So agriculture, food na rural area रे practice पे and primitive technologies are used. नहीं की? कौन हो agriculture रे? ना primitive technologies are used in agriculture. एवं rural area रे हुए कौन? जेहेतु primitive technologies are used, जेहेतु primitive technologies used, rural area रे भावंती कि
now more number of children is required because of कौन पाई दरकार more number of children are required because of more number of income income अधिक हो children number of children अधिक रहिले income अधिक हो है ना poverty is another factor which leads to high birth rate poverty कारणରୁ ମଧ୍ୟ birth rate बढ़े the social factors like low age of marriage religious expansion of medical facility increase होउछि एवं लो जते मैरिजेबल एज ता जते कम हबो ऑटोमेटिकली सेते अधिक नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्थ हबो ना लो डेथ रेट काहे होउछि ना डिजीज जोडा का आगुर जीवन नोथ लाइक स्मॉल पॉक्स एंड ऑल पोलियो ये सब कमी गलानी ये सब माने या पे सब वैक्सीन बाहरी गलानी दे कैन बी इराडिकेटेड improved supply of drinking water safe drinking water there are different schemes like vasudha scheme or there are different schemes like vasudha there is spread of improved sanitation and hygiene along with relevant awareness expansion of medical facilities and establishment of superstitions lack of education low status of women now these are the causes of low death rate बुझेला ई पर्यंत ना काको डाउट अछि now what are the measures that we can check for population explosion पई कोन कोन मेजर्स हम आनि परबा ई पर्यंत बुझेला समस्त को ना डाउट अछि यदि डाउट अछि कोन तापर आगो बुझी इल गो स्लो जिबा बट सब बुझी के जिबा एनी डाउट जल्दी कोन एमसीक्यू मु करेबी डोंट वरी हमें नेक्स्ट क्लास रू विल प्लान फॉर एमसीक्यूज तो हम नेक्स्ट क्लास आसीबो तो हमें एमसीक्यूज पे प्लान करिया now what are the measures to check population explosion कमिया पे कोन कोन मेजर्स हमें नहीं परिया फर्स्ट इकोनॉमिक मेजर्स फर्स्ट कोन इकोनॉमिक मेजर्स से वी कैन गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बढ़ई परिबा so it has been observed that employee in industrial sector prefer small family size as compared to the persons indulged in agricultural sector so employees have to face frequent transfer and have to maintain a living standard opportunities for employment facilities बढ़ेगा दरकार reduction of income inequality equal distribution of resources equal distribution of resources social measures हमें कौन आनी पड़े ना expansion of educated people envisages to provide quality and higher education to their children so they prefer small family size
improving status of women, improving status of women. Status of women in every society matters a lot in controlling population. Family planning program ani pariba hela. Now आउ किसी population policies केतरा खाली committee ना कहिबे एवं से committee कोन आनथले मे भी committee ऊपर क्वेश्चन आसी पारे बहुत इंपोर्टेंट याको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिस कर दियंती पढंतीनी प्रॉपर्ली. राधा कमल कमिटी 1940 ये कहला अवेयरनेस क्रिएट करियो फॉर सेफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. गोर कमिटी 1943 recommended for controlling the growth rate of population. फैमिली प्लानिंग এটা দরকার নাই, এটা মেন্স अप्रोच. ओके एतिक पॉइंट हमर बुझिवा दरकार. गोटे पॉइंट खाली गिग वर्कर्स रिलेटेड स्मॉल डिस्कशन. गिग वर्कर कोन कहलो? गिग वर्कर मानकर ना सुनिचो? You heard about this term gig workers? You heard about this term gig worker? No. ना को माने ना जो माने ओला उबर जोमाटो स्विगी एति सब काम करछन से माने सेही टाइप रो आसन गिग वर्कर भीतर. तो गिग वर्कर रो प्रॉब्लम कोन ना व्हेन देयर इज अ डिमांड यू विल हैव सप्लाई. तो काम करियो तो डिमांड नहीं तो घरे बसियो किसी काम मिलिबन. ओला कोन जति समय काम करियो ओला तक सेति पैसा मिलियो पूरा डे फुल डे हिसाब रे मिलेनी. देयर इज लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इरेगुलर वेज, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. There is uncertainty of work. Income may lead to increased stress and pressure. Limited access to internet, digital technology, it can be hindrance. So these are the issues faced by gig workers. These are the issues faced by gig workers. ताले नीति आयोग कौन रिकमेंडेशन देले? नीति आयोग रिकमेंडेशन आसला कि प्रॉपर एस्टिमेशन एस्टिमेट करो केते गिग वर्कर अछंती, सनकर स्किल डेवलपमेंट कराओ, स्किल डेवलपमेंट करो फॉर गिग वर्कर्स. ओके गिग वर्कर बढ़ुचंती कोन पय ना बिकॉज़ ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स. नो हैसल ऑफ नोटिस पीरियड और ट्रेनिंग किछि नाही. हैसल ऑफ नोटिस पीरियड नाही. They can leave their job whenever required. Now problem कौन है? What are the challenges or what are the criticism? Criticism और challenge होची high attrition rate of workers. Attrition rate बहुत अधिक. Attrition माने चाकरी छाड़ी के आउ गोटे चाकरी को पळे. They will shift, they will switch from one job to another job. Poor level of loyalty on the part of workers. कहीं ना से तो अल्प दिन काम करियो सी loyalty कहीं देखेओ. Poor level of loyalty on the part of workers. Vulnerability of workers in terms of removal from work by employer. Coordination also possesses a big challenge. More chances of leakage of confidential information or strategy. Freelance रे जे काम करछि तार कोन फरक पड़छि confidential information. He is not loyal to the company because company भी ता पई सेमति किछि करनी. company ताको provide करनी health care benefits दोनी company दोछि. There are so many things which are not provided by the company. So automatically the worker, gig worker has less loyalty towards the company. तार भी loyalty कमी जाउछि. हैला बुझियला challenges criticisms no doubt. आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे सेंसस ऊपर. सेंसस केबे हितला? लास्ट फास्ट सेंसस केबे हितला? ऑल इंडिया सेंसस फास्ट हितला 1872 and regular census होची तापर 1881. thereafter every 10 year. Now last census was 2011. last, this is first.
नो ईयर आउट डेंसिटी को 1951 डेंसिटी था 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1981 ने 216 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1991 267 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी माने गोटे स्क्वायर किलोमीटर रे केते लोक रहउछन, गोटे स्क्वायर किलोमीटर कोन एमि न गोटे किलोमीटर गोटे किलोमीटर गोटे गोटे किलोमीटर, ई जेतिक एरिया हला एटा हला 1 स्क्वायर किलोमीटर। यदि 1 किलोमीटर हुए सब एरिया गुडा लेंथ ऑफ ब्रेड ताल ता भीतर एई एरिया रे केते लोक रहउछन, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे केते लोक रहउछन। ना इट्स क्वेश्चन कोन पचारिबो तुमको ना पचारिबो ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट किए, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट किए, मोस्ट डेंसली यूनियन टेरिटरी किए, लीस्ट डेंसली यूनियन टेरिटरी किए। 2011 डाटा अनुसार बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, 2001 अनुसार दिस इज द वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरी जदि हम देखिबा दीटा जाकर दिल्ली, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड होची अरुणाचल प्रदेश, दीटा लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी होची अंडमान एंड निकोबार। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इटा मन रखिबे, एटु क्वेश्चन आसी। इज दिस क्लियर और डाउट? एनी क्वेश्चन जति के टॉपिक हमें पढ़िले ता ऊपर किछि क्वेश्चन बुझिएला ना बुझिएलानी? फर्स्ट कथा ना जहां इंपोर्टेंट ए टॉपिक रिलेटेड फॉर प्रीलिम्स आई डिस्कस्ड, बहुत स्लो जाउचे, बिट बाय बिट जाउचे विथ क्लैरिटी। नाउ as promised earlier I will make economics easy for you, but what is required from your side, you have to be quite cautious. Screenshot now side or yes, screenshot. You have to be religious. Done. Okay. I hope this is clear. आउ जहाँ चे हमें देखिवा पुनी नेक्स्ट क्लास। ताले आजिरो क्लास रो कोन बुझिलो? कोन बुझिलो आजिरो क्लास रो? डेमोग्राफिक डिविडेंड, theories of population growth, theories of population growth। ହେଲା ठीक अछि। ओके एति की पढ़ी के आसा आउ जहाँ से पुनी नेक्स्ट क्लास देखियो, आसना काले देखियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। गुड नाइट। थैंक यू। नहीं देह ठीक है नहीं, तथापि ठंडा ज्वर हो जाइए बहुत जोर। तो भी गोटे क्लास काली बंद करथिले, म बंद कलिनी, ग्रेजुअली इट विल इंप्रूव। ठीक अछि, थैंक यू।